Good morning, students. In the previous lectures, we have done a lots of few introductory part of this coordination compounds. In the present, today we are going to work on the IUPAC nomenclature of the coordination compounds. That question is also coming in your board examination as well as your competitive examinations. Okay. Here, two type of the coordination nomenclature we are going to studying about that one. So actually, this is not complex. It's a very simple. It's a very short topic. Here we are studying about the two type of coordination compound, mononuclear and polynuclear. Mono means in which one metal is surrounded by different ligands, and poly means when two metal is attached with each other as well as the ligand is also attached with the metals. So that is known as it's a polynuclear. Okay. So it's a two nomenclature is here, but the rule is same. Okay. So we starting for the nomenclatures of the coordinations compound. You know the coordinations compound, the different coordinations compounds are here. So we are going to study about the coordination chemistry of the compound. So we starting few rules. Just I am giving you example K3, that is K3Fe CN5N. This one is a coordination compounds. ये क्या है आपका एक coordinations compounds में इसकी study की जाती है. Okay. So here the quotation is positive. Iron is a central metal atom, Cn is ligand, and NO is also ligand. So I'm just giving you the one by one. The first rule of coordination compounds. The positive ions. If the any coordination compound having a positive ions, we are writing its name first. अगर आपकी coordination compounds में कोई भी cations है, if they contain any positive charge species, you just write down its name first. Then you are going to write down the name of the negative charge species. So first of all, give the priority to the positive charge species. You know, in case of if you are writing the sodium chloride, so we always giving priority to positive first. So first of all, we are writing the positive species, then we are writing the negative species. Same as well as the thing is going on here also. So here what we are doing, here we are writing the positive ion first, then we are writing negative ion. So here the positive cation is potassium. So we are writing the name of potassium is first. The second rule, okay, the second rule says within a complex the ligands are named first followed by the metal ions. That is the ligands. This one is not ligand. You know, this is the counter ions. So we are not including counter ion into this ligand properties. Here the everything inside this bracket, counter brackets or coordination brackets, inside the central metal ions, and central metal ion attached with these substances, and these are known as the ligands. So rule says you just write down the name of the ligand first, then you are going to write down the name of the central metal ion. So हम क्या करेंगे, पॉजिटिव आयंस के बाद हम किसको देखेंगे, ligands को, और उनके नाम लिखेंगे comparison to the central metal atoms के. So you just give the priority to the ligand. Suppose if no cation is here inside your complex, you give the priority to the ligands. Then you just give write down the name of the central metal ions. So in the second rules, we are always giving priority to ligands. Okay, we just giving to the priority to the ligands. So we are just going to write down the name of the ligand, then we are going to write down the name of central metal ions. Okay, that is the second rule. The third, in the second rules, the ligands are different types. First of all, negative charge. You already taught you, if your ligands carrying a negative charge, just Cn minus 1, Br minus 1, SO4 minus 2, okay, and as well as the oxalic acid minus 1. So what happened if the species carrying a negative charge, its suffix we are using generally using ite, but here the ite is replaced by O, like its name is chloride. Okay, इसका नाम generally क्या होता है, chloride, but E is replaced by O, so we are using chlorido. Here is also bromido. His name is sulfate, ATE, sulfate. So E here is also E replaced by O. So that is the sulfato. And here the whole compound is oxalate, LATE. So its E is replaced by O, so its name is oxalato.
So in case of the negative charge ligands, just E is replaced by O. So that is name is chlorido, bromido, sulfato, oxalato, nitrito. The different types of negative species there and their suffix E is replaced by O. Okay, always just use such type of terminology in case of the negative ligand, such like CN. Okay, the CN carrying a negative charge, so its name is cyanato. Okay, cyanide generally we are using here. Okay, so the next rule, if the compound or complex having a neutral ligands, in case of the neutral ligands, in case of the neutral ligands, you are not using any specific suffix, we are just going to write down its name as well as, okay, like NH3. So here we are using ammonia. इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, these are neutral ligands. In case of the neutral ligands, इनका नाम ऐसे ही बोला जाएगा, ammonia. But ammonia is here and H2O. For H2O, not using water, its name is aqua or aqua. Okay, so these are the neutral species. So we are writing its name as well as same. Like another species neutral is CH2, NH2. You know, we already taught you the classification of ligand. It is ethylene. Ethylene means 2 carbon ethyl group, 2 NH2, diamine. So its name is ethylene diamine. It's a neutral ligands. So we are not using a specific suffix for the such kind of the ligands. We are going to write down its name as well as same. If suppose your compound contain any positive ligands, अगर इस पे कोई neutrals और negatives ना होकर कोई positive ligands attached हो, if your compound contain a positive ligands, in case of the positive ligands, we are using their I or E replaced by EM. Suppose ammonia. If ammonia carrying a positive charge, so its name is ammonium. Ammonium. Suppose chlorine not contain negative, if it is contain a positive charge, so its name is not using chlorine or chlorido. Its name is chlorium. IUM. Chlorium. So at the last end we are using EM. Ammonium, chlorium. Okay. So if any positive species are here, there is a no positive species. Okay. So that is a chlorium, ammonium, chlorium, IUM. Generally we are adding IUM. So it's a kind of the ligand. The second thing, if suppose the same ligand present in one time, so we are using mono. If your ammonia, suppose your cyanide is using 5 times, so we are using penta. If some such type of ligand is available, the ammonium is available in a 4 times, so we are using tetra. If it is available in a 3 times, so we are using tri. If it is available in a 2 times, so we are using di. So it is deciding the how many ligands are attached to the certain metal atoms. So if the ligands attach more than 2 times, so we are using certain term di, tri, tetra, penta, hexa. Okay. So generally this is for such ligand. But if the ligand is more complex, अगर हम complex ligands की बात करते हैं, ligands आपका बहुत ज़्यादा complex हो जाए, जैसे बहुत बड़े structures अगर ligands के हों, हम बात कर रहे हैं polydentate ligands के. Polydentate we taught you EDTA, ethylene diamines. If suppose ethylene diamine is represented by EA, so it is available in a 2 times. अगर एक बड़ा सा neutral ligands या polydentate ligands 2 times में available है, तो इसके लिए क्या use किया जाता है? Bis. Bis means 2 times. If it is available in 3 times, so we are using tris. Okay. So we are using the certain word bis, tris. इससे ज़्यादा ऐसे आपका available होगा नहीं. Generally we are using bis, tris. It is using for the polydentate ligands. ये generally terms polydentate ligands के लिए हम use करते हैं. So it is a way and terminology for the polydentate, monodentate, negative, neutral, positive ligands in complex ions. So अगर आपका कोई ऐसा ligands available है, तो उसके लिए आप इन conditions को क्या करेंगे? Apply करेंगे. The next one is, the next rule says, if order of naming ligands. Ligands आपने पढ़ लिया. If 2 and more type of ligands are available, suppose this is a complex and that complex contain NH3 whole 4 ClNO. 1, 2, 3 types of ligands are here. So if any compound having 3 types of ligands, we are writing their name alphabetically. Ammonia starting from A,
chlorine is starting from C, nitro starting from N. So we are writing ammonium, chlorine, you know, chloride. So chlorine contain a negative charge, so its name is chlorido. Tetra ammonium chlorido nitrosyl. Why? Because NO is a neutral ligand. मैंने आपको पढ़ाया था, आप उसे चेक करिएगा. NO is a neutral ligand, so that is a nitrosyl. So tetra ammonium chloronitrosyl. So if any complex contain more than 2 ligands, so we are writing their name according to alphabetical order. Okay, so its name is, we are just going to naming for the alphabetical order. तो आप इसको किस में अरेंज करेंगे? Alphabetical order में अरेंज करेंगे. That is another rule. The next rule says again. So cations हो गया, ligands हो गया, neutral, positive, negative. Then we are talking about the center metal atom. At the last we are writing the name of the center metal atom. If we are writing the name of the center metal atom, like its name is iron. So with iron we are writing its oxidation state in Roman number. At the last of the end of that complex we are writing the name of the central metal atom, nuclear atom जिसे आप कहेंगे, and we are also writing its name by using a Roman number. Suppose इसका oxidation state यहाँ पे 3 है, तो we are using 3. अगर यहाँ पे 4 होता तो we just used 4. इसका oxidation state 5 होता तो we just use 5. So it is a way of writing the oxidation state of the central metal atoms. That is another rule at the end of this complex compound. So इस complex compounds के end में हम क्या करेंगे? इसका complex number लिखेंगे. And the last rule is says, last rule, अगर इस पूरे complex में negative charge हो तो last में क्या लगाना पड़ेगा? 8. अगर कोई भी charge ना हो, okay, positive हो या neutral हो, तो आप 8 नहीं लगाएंगे. जैसे अब इस कंपाउंड का पूरा नॉमेनक्लेचर्स करते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा. अब आपको हाउ जस्ट यू फाइंड आउट दैट कंपाउंड कंटेन अ नेगेटिव चार्ज? सी. अगर इस कंपाउंड में कोई पॉजिटिव कैटायंस जुड़ा है, तो अगर मैं 3 पोटेशियम्स हटा दूं, तो पोटेशियम्स क्या है? इट्स अ मेटल, और मेटल जब भी हटेगा इट्स डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन. तो ये पोटेशियम इसको इसके इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके जाएगा. एक पोटेशियम हटाने पे एक नेगेटिव चार्ज. तो कितने पोटेशियम्स हटाए थे? 3. तो वी आर डिनोटिंग बाय 3 नेगेटिव चार्ज. तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? 3 नेगेटिव चार्ज से शो करते हैं. तो दैट कॉम्प्लेक्स इज अ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, और इसका जो एंड होगा वो किससे होगा? 8 से होगा. ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन दिस नेम ऑफ दिस कंपोनेंट. ओके, सो हियर द रूल सेज फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ कैटायंस. इसमें कौन सा कैटायन था? Na3. अब इसका नाम लिखना है पोटेशियम. इट्स नेम इज पोटेशियम. फिर मैंने आपसे बोला था सेंट्रल मेटल से पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है अल्फाबेटिकल में. दिस इज साइनो एंड नाइट्रोसिल. साइनो सी पहले आता है, कितने हैं? 5. सो पोटेशियम्स के बाद गैप रखेंगे, कैटायंस और कॉम्प्लेक्स के बीच में गैप रखा जाता है. हाउ मेनी? पेंटा साइनाइड. ओके, सो इट इज अ पेंटा साइनाइड बट इज नॉट आइड. मैंने अभी क्या बोला था? अगर नेगेटिव है तो इसे किससे रिप्लेस करो? O से. सो दैट इज साइनो. दैट इज पेंटा साइनो. दैट स्पीसीज इज न्यूट्रल, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, सो इट्स नेम इज नाइट्रोसिल एज वेल एज ऐसे लिखिए नाइट्रोसिल. सो पोटेशियम्स कैटायन, द नेम ऑफ द लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली पेंटा साइनो नाइट्रोसिल. अब लास्ट में क्या लिखेंगे? मेटल्स नेम. इट्स नेम इज आयरन, बट यहाँ पे आयरन नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव. तो इसको आप क्या लिखेंगे? फेरेट. FERR. क्या लगाते हैं लास्ट में? ATE, फेरेट. और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 3. So it's a way. So first of all we are using cation name, then we are using alphabetically ligand's name. If ligand is negative, so we are using O. Chlorido, cyano, okay, and then is a nitrosyl. Why we are not using IMO here? Because it is a neutral ligand. And last we are going to write down the name of central metal atom. Metal is iron. हम इसमें iron use करते कब? जब ये neutral या positive ligands होता. मगर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है, इसका मतलब इस पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव. और जब भी कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज हो तो उस कंपाउंड की एंडिंग किससे की जाती है? 8 से. दैट इज नेम इज फेरेट
and we also writing its oxidation number in Roman way, that is 3. So its name is potassium, okay, that is a potassium pentacyano-nitrosyl ferrate. I am giving you another example also. PtNH3 का whole 6, PtNH3 का whole 6 Cl4. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि नेगेटिव है या पॉजिटिव. बाहर क्या जुड़ा है आपका, क्लोरीन. तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देकर नहीं लेकर जाता है. तो अगर मैं 4 क्लोरीन हटा दूं तो 4 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो इसमें कैसा चार्ज आएगा, 4 पॉजिटिव. यानी कि इसमें 8 नहीं लगेगा बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन. तो जनरली इसको जोड़ दीजिए. ओके, सो सी यहाँ पे कोई कैटायन है, दिस इज नॉट ए कैटायन, दिस इज एनायन. तो उसका नाम बाद में लिखा जाएगा, नहीं है, रिमूव कर दीजिए. अब लिगेंड्स लिखा जाता है. लिगेंड्स क्या है, अमीनो. अब ये कैसा लिगेंड्स है, न्यूट्रल. तो उसका नाम कोई EM O नहीं इंक्लूड करा जाएगा. हाउ मेनी लिगेंड्स देयर, 6. तो यहां पे हम यूज करेंगे हेक्सा अमीनो, हेक्सा अमाइन. आप अमाइन भी यूज कर सकते हैं और अमीनो यूज कर सकते हैं. हेक्सा अमाइन प्लैटिनम. ओके, प्लैटिनम इज हियर. So generally we are using जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है उन सबका नाम एक ही लाइन पे आप लिखेंगे, नो गैप्स. हेक्साअमाइन प्लैटिनम, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर. सो सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. its oxidation state is 4. okay, and this is chloride. This is generally using as a chloride because it is not a part of, ये ligands नहीं है, ये काउंटर आयंस है, इसलिए मैंने O नहीं लगाया यहाँ पे. अगर कोई भी कंपाउंड्स आपका कॉम्प्लेक्स के बाहर हो तो इस केस में आप उसको ligands नहीं मानते, that is a counter ion. और in case of the counter ion you are not using O. So its name is a hexaamine platinum 4 chloride. तो ये क्या हुआ आपका, hexaamine platinum 4 chloride हुआ. तो यहाँ पे आपका कोई कैटायंस नहीं था और जितना भी कंपाउंड्स का नाम है इसको कॉम्प्लेक्स के बीच में रखेंगे इस तरह से, इसके बीच में गैप्स नहीं लगाएंगे. Okay, so that is a way to identify the name of this compound in complex. तो ये तो है mononuclears. I am just giving you another example. That is CrH2O. That's named CrH2O whole 4. That is Cl2. Okay, so the whole complex contain a positive charge. अब the chlorine here is behaving like a ligand क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है. अब आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, O यूज करेंगे. So here is a no positive cation is here, so remove that, skip it, skip कर दिया. अब देखिए ये है aquo, वाटर के लिए यूज किया जाता है aqua, and that is a neutral ligand. और ये है C, क्लोरो. तो A और A फर्स्ट आता है और C बाद में आता है. तो पहले इसका नाम लिखिए टेट्रा, नो गैप, टेट्रा AQUO, टेट्रा aquo, then chlorido. Okay, so tetra aquo chlorido, that is chromium. Then make a gap, chromium 3. So its name is tetra aquo chlorido chromium 3. Okay, और बाहर चार्ज लगा है तो आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, आयन. So its name is tetra aquo chlorido chromium 3 ions. So tetra aquo first is starting from A. तो इस लिगेंड का नाम पहले लिखा और इसमें कोई भी गैप नहीं छोड़ेंगे. अल्टरनेटिवली इसको एक साथ लिखते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो भी कंपाउंड्स होता है उन कॉम्प्लेक्स का नाम एक ही लाइन में अल्टरनेटिवली लिखा जाता है. They have no space in between them. It is a mononuclear compound. Mono means here only one metal attached with the different ligands, so that why it's mononuclear. Then I am giving you some more knowledge about the polynuclear. अब देखिए polynuclears का, that is the last one. In case of the polynuclear compounds, मैं आपको polynuclear compounds का example दे रहा हूँ. In case of the polynuclear compounds, that is a bridge type of compound. That's why the coordination chemistries are very important. Here in case of the polynuclear compounds, we are using, it is attached with the NH2. Here is a one more ligand is here, that is OH is attached with again
CO, En का whole twice SO4. So guys, here this compounds contain which charge? That compounds contain how many charge? SO4 का whole twice. That compound sulfate is negative. If sulfate is removing here, तो that compound contain positive. तो इसका मतलब इसमें negative नहीं है, इसमें कोई भी 8 नहीं लगेगा. So such type compounds are known as a bridged compound and polynuclear compound. See how many nucleus? One nucleus attached with this ligand. This ligand is also. Another center metal atom nucleus attached with this ligand and this ligand is also. So that's why it is a polynuclear. And this type of compound is a bridged compounds. तो इस compounds में क्या करना है देखिए, मैंने बोला था जवाब से कि किसी कंपाउंड में इस तरह के कॉम्प्लेक्स हो, जैसे पायरिडीन हो, इथाइलिन डायमीन्स हो, तो इनकी नेमिंग कितने एटम्स हैं उसको दिखाया जाता है किससे? बेस ट्रेस से. तो En का मतलब क्या है? इथाइलिन डायमीन्स. ओके, सो हियर वी आर राइटिंग व्हाट? इथाइलिन डायमीन्स. सो यहाँ पे हम इथाइलिन डायमीन्स का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे. दैट इज इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमाइन, मगर है कितने? दो. तो यहाँ पे लिखेंगे बेस. बेस इथाइलिन डायमाइन अटैच्ड विद कोबाल्ट. सो यहाँ हियर वी आर राइटिंग कोबाल्ट 2. देन दिस कोबाल्ट अटैच्ड विद 2 लिगेंड्स. यह है हाइड्रोक्सी स्टार्टिंग फ्रॉम H, यह है अमीडो स्टार्टिंग फ्रॉम A. तो A और H में कौन पहले आता है? A. तो हम अमीडो को पहले यूज करेंगे. और ब्रिज के लिए क्या यूज किया जाता है? म्यू. अगर कोई कंपाउंड ब्रिज में है तो इसके पहले क्या लगाएंगे? म्यू. सो म्यू अमीडो, और फिर है म्यू हाइड्रोक्सो, वो लगाना जरूरी है. सो इट्स अ बेस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 2 म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो. फिर देखिए लिगेंड्स का नाम लिखिए, फिर से है कितने हैं? 2. तो फिर से लिखेंगे बेस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, इट्स रोमन ऑक्सीडेशन स्टेटस 2. सो इसका क्या नाम लेकर आया? और लास्ट में आप क्या लिख देंगे? सल्फेट. सल्फेट 2 है तो उनको बाय ट्राई नहीं लिखा जाता, एक ही लिख दीजिए, इससे इनफ है क्योंकि उनका कोई ज्यादा रोल नहीं होता. सो इट्स अ इथाइलिन डायमीन. सो वी आर हाउ मेनी इथाइलिन डायमीन इज देयर? 2. सो फॉर 2 वी आर यूजिंग बेस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 2. Here is the 2 ligands, bridge ligands. It's starting from A, starting from H, so we are giving priority to A. That is, and for the bridge presentations shown by a mu sign. So mu amido, mu hydroxo, base for this one. दो इथाइलिन डायमीन्स हैं, base इथाइलिन डायमीन, that is cobalt 2 sulfate. So it's the name of for the polynuclear compounds. ये आपका क्या है? polynuclear compounds का name है. Same as another one. इसी तरह से एक पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स और देख लीजिए. Here we are using H2O का whole core Fe attached with OH as well as the OH. Okay, FeOH का whole core, and here is also they both are attaching with Fe H2O का whole core and here SO4 का whole twice, that is H2O. That one is another polynuclear compounds. ये आपका दूसरा polynuclear compounds है. ओके, इसका हम करते हैं. इस पे दोनों क्या है? आपके लिगेंड सेम है तो इनको एक ही टाइम का आप लिख सकते हैं. So first of all we starting from here. That is a water, so we are using aqua. Okay, so we are using generally tetra. So its name is how many? 4. Tetra aquo. Aqua भी लिख सकते हैं. टेट्रा एक्वो साथ में अटैच करके लिखिए आयरन. इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट हियर 3. ओके, देन म्यू हाउ मेनी हाइड्रोक्सी? 2. सो हम क्या लिखेंगे? डाइहाइड्रोक्सी. देन अगेन टेट्रा एक्वो, then iron 3. So
its name is tetraaqua iron 3 mu dihydroxo tetraaqua iron 3 और लास्ट में क्या जुड़ा है आपका सल्फेट. So these are the nomenclatures of the compounds in which we have done the mononuclear as well as the binuclear. So इस तरह के compounds आपके board examinations में they contain some geometries also, cis trans, but is not in your syllabus. Here when we are going to, after that topic, we are going to study about their isomerism. They contain a different types of structure. Their structural properties are very important. This is a 2 marks question. In our next topic, we are going to study about this. But here the 1 marks question is coming, maybe MCQ based or maybe in your generally the IUPAC name based question is coming. And we are also saying to find out the oxidation state of the ions. यहाँ पे oxidation state find out करने के लिए भी पूछा जाता है. And we are talking about its stability. They are stable according to EAN rule. वो हम बाद में पढ़ेंगे. It is not your syllabus. I'm going to teach you how they are stable. So you just solve the other question is also based on the same IUPAC rules and find out the oxidation state of this polynuclear atom in the given complexes. So guys, today we have done our IUPAC nomenclature. So thank you.